morning all of you. Myself Mr. Vilas Thakre. In the last lecture we studied about the electron transport system, that is the ETS, and how the NADH2 and FADH2 are get oxidized so as to release the energy in the form of ATP inside the mitochondria. So aerobic respiration consists of three main phases we already studied. First stage is the glycolysis. Then second one is the Krebs cycle, or it is also called as the TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, or it is also called as the citric acid cycle. And third was the ETS, that is electron transport system. So during aerobic respiration, one molecule of glucose get oxidized. One molecule of glucose, only one molecule of glucose get completely oxidized so as to release the energy in the form of ATP. So from the complete oxidation of one glucose molecule, there is formation of 38 ATPs. Actually, there are formation of the 40 ATPs, but 2 ATPs are utilized during the glycolysis. That's why net gate is the 38 ATPs. So these 38 ATPs are formed during the glycolysis, Link reaction, Krebs cycle, and the ETS. Okay. So one molecule of glucose is completely get oxidized so as to form the 38 molecule of the ATP. And we know that when one molecule of ATP is get broken down, that will release 7.3 kilocalorie energy. So today we have to study the summary of aerobic respiration. Aerobic respiration mainly consists of three phases: glycolysis, Krebs cycle, and electron transport system. And we have to see the summary of the aerobic respiration. Okay. So we know that in the cell, mitochondria is known as the powerhouse of the cell. And in the last lecture or previous lecture, we studied about the ultrastructure of the mitochondria. And we know that ETS is occurring inside the mitochondria on the oxysome or on the inner membrane. And there formation of the 34 ATP out of these 38 ATPs. So the coenzymes NAD and FAD get reduced into NADH2 and FADH2 during this aerobic respiration. So today we are going to learn about the summary of the aerobic respiration. So here in the cytoplasm, first the glucose molecule get broken down into two molecules of pyruvic acid. Okay, हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा. That process is called as the glycolysis. We know that what is a glycolysis. Glycon means glucose, and lysis means breakdown. So here is the breakdown of glucose molecule, but that breakdown is occurring stepwise and enzymatic. So that's why glycolysis is known as the stepwise and enzymatic breakdown of glucose so as to form the two molecules of pyruvic acid and the release of energy in the form of ATP. So here formation of the pyruvic acid. So glucose is a carbohydrate. So when carbohydrates are the respiratory substrate, then that first get broken down into simple organic substances like the glucose molecule, and then that glucose molecule get broken down into two molecules of pyruvic acid. And we know that pyruvic acid first get converted into acetyl coenzyme A. Pyruvic acid first get converted into acetyl coenzyme A by the process of acetylation of pyruvate, or that is also called as the link reaction.
and then acetyl coenzyme A enters into the mitochondria, and that acetyl coenzyme A enters into the Krebs cycle. So here glucose molecule, when the carbohydrate or the respiratory substrate glucose molecule get converted into the pyruvic acid, that pyruvic acid enters into the mitochondria, and first that pyruvic acid converted into the acetyl coenzyme A with the help of link reaction or the acetylation of the pyruvate, and then that acetyl coenzyme A enters into the Krebs cycle or the cyclic acid cycle or the TCA cycle. And here in the Krebs cycle, the acetyl coenzyme A is completely get oxidized. साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा और साइटोप्लाज्म में क्या फॉर्मेशन होगा, पायरुविक एसिड का. We know that glucose consists of 6 carbon and pyruvic acid consists of 3 carbons. Now this 3 carbon containing compound pyruvic acid enters into the mitochondria and then it is get converted into acetyl coenzyme A. This acetyl coenzyme A consists of only 2 carbons. कितने कार्बन होते हैं इसमें? सिर्फ 2 ही कार्बन होते हैं, क्योंकि जब एसिटिलेशन होता है पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन. इसमें सबसे पहले क्या होगा? डिकार्बोक्सिलेशन होगा. 1 कार्बन कैन बी रिमूव्ड, वो रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2. उसके बाद पायरुविक एसिड में ऑक्सीडेशन होगा, देन NAD गेट कन्वर्टेड इनटू द NADH2, और जो एक कार्बन रिमूव करने के बाद जो एसिडिक फ्रैक्शन होता है, that acidic fraction reacts with the coenzyme A so as to form the acetyl coenzyme A, which consists of the 2 carbon. Now this acetyl coenzyme A enters into the Krebs cycle, और हमने Krebs cycle में स्टडी किया है कि acetyl coenzyme A का complete oxidation होता है, और during Krebs cycle there is formation of the 6 molecule of NADH2 and 2 molecules of FADH2. Means 6 NAD coenzyme NAD get reduced into NADH2, while 2 molecules of coenzyme FAD get reduced into FADH2. We know that Krebs cycle occurs twice. Okay, and during ETS or the electron transport system, the NADH2 it can be also written as NADH plus H plus, or simply it can also written as directly NADH2. When this reduced coenzyme NADH2 get broken down with the help of enzyme NAD dehydrogenase, we know that enzyme dehydrogenase is utilized for the removal of the hydrogen, and here the NAD dehydrogenase remove the hydrogen, and when that hydrogen is get broken down either from the removal of hydrogen from NADH2 or FADH2, that will release protons and the electron, that is H plus and the electron. Now these electrons, the protons are transported toward the intermembrane space, or that is also called as the perimitochondrial space. Okay, this is the ultrastructure of the mitochondria. ये उसका outer membrane है, ये इसका inner membrane है, और ये जो space है in between outer membrane and the inner membrane, that space is called as the intermembrane space, or this is also called as the perimitochondrial space. So हमने last lecture में स्टडी किया था कि during ETS or electron transport system, the protons are accumulated or the hydrogen ions are accumulated into this intermembrane space or the perimitochondrial space. Okay, और यहाँ पर ये डिपॉजिट होने के बाद ये जो प्रोटॉन्स या फिर हाइड्रोजन आयंस होते हैं, दे आर एंटरिंग इनटू द कॉम्प्लेक्स 5. कॉम्प्लेक्स 5 क्या होता है? एटीपी सिंथेस, और एटीपी सिंथेस कहाँ पे होता है? ऑक्सीजोम में होता है. कहाँ पे होता है? ऑक्सीजोम. एंड वी नो दैट ऑक्सीजोम कंसिस्ट ऑफ F0 पार्टिकल. F0 पार्टिकल में से यहाँ पर ये एंट्री करेंगे, एंड व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड द F1 पार्टिकल, जब वो F1 पार्टिकल के मेम्ब्रेन में से मूव होंगे, देन दैट कैरी सम मेटाबॉलिक एनर्जी, and that metabolic energy is utilized for the addition of inorganic phosphate with the ADP molecule, that is adenosine diphosphate, and there is formation of the ATP molecule. Okay, and here the electron is accepted or transported towards the half O2, and that half O2 reacts with the 2 hydrogens so as to form the water molecule
this water molecule is also called as the metabolic water. ओके, यहाँ पर NaDH2 और FADH2 जब इनका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं या फिर जो प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं वो कहाँ पर आके एक्यूमुलेट होते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एक्यूमुलेट होते हैं। ये स्पेस कहाँ पर होता है, दैट स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर ये डिपॉजिट होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। Here is the higher concentration of these protons or the hydrogen ions, and we know that when there is a higher concentration, then they can diffuse from their region of higher concentration to region of lower concentration up to the equilibrium is obtained. So यहाँ पर क्या होगा, जो मैट्रिक्स है, यहाँ मैट्रिक्स में लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन मूव होंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ये जब मूव होंगे तब सब मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू add the inorganic phosphate with the ADP molecule so as to form the adenosine triphosphate. Okay, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, that electron is transported towards the half photon, that half photon reacts with the two hydrogen so as to form the metabolic water. और ये जो मेटाबॉलिक वाटर होता है, ये मेटाबॉलिक वाटर क्रेब्स साइकिल में फिर से यूटिलाइज किया जाता है। ओके, सो ये हो गया जब कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। बट व्हेन द प्रोटीन्स आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, बट जब प्रोटीन्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं, देन दैट प्रोटीन अंडरगोज डीअमाइनेशन। सबसे पहले क्या होता है कि प्रोटीन जब प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड। प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। Proteins are the polypeptide chain of the amino acid. So that amino acid undergoes the deamination. जब इनमें अमाइनो ग्रुप रिलीज हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा, उसे हम क्या कहते हैं, डीअमाइनेशन, दैट इज कॉल्ड एज द डीअमाइनेशन। So after deamination, amino acids are get converted into pyric acid, and then that pyric acid get converted into acetyl coenzyme A, and then that acetyl coenzyme A enters into the Krebs cycle, and this further processes get carried out. Okay, and when the fats are the respiratory substrates, जब fats respiratory substrate होते हैं तो क्या होता है, that fats are get broken down into the fatty acids and the glycerols, and that fatty acids are the glycerols. First the glycerols are get converted into the DHAP, dihydroxyacetone phosphate, then they are converted into its isomer, that is the glyceraldehyde 3-phosphate, and that glyceraldehyde 3-phosphate is get converted into acetyl coenzyme A. The fatty acids are directly converted into the acetyl coenzyme A by the process of beta oxidation, and then that acetyl coenzyme A enters into the Krebs cycle, and during Krebs cycle there is formation of the NADH2 and FADH2, and in further process in ETS that NADH2 and FADH2 undergoes the oxidation so as to form the ATP molecule and the metabolic water. जब 1 NADH2 का ब्रेकडाउन होगा there is formation of 3 ATP molecules, और जब 1 FADH2 का ब्रेकडाउन होगा there is formation of the 2 ATP molecules. Okay, so this is all about the summary of the aerobic respiration, in which during glycolysis, Krebs cycle or ETS, how this process is occurs when the respiratory substrate is carbohydrate, then how that can be broken down and how it enters into the mitochondria, or the proteins or the fats when they are respiratory substrate, how they enters into the mitochondria and how there is formation of the ATP molecule. So during aerobic respiration there is formation of 38 ATP. Okay, now we have to see the ATP count during the aerobic respiration.
today we have to see the balance sheet of ATP for oxidation of one glucose molecule by aerobic respiration. So we know that during aerobic respiration, the first step is the glycolysis. The first step is the glycolysis. During glycolysis, there is formation of the 4 ATP molecules. So how many ATP are formed during the glycolysis? There is formation of the 4 ATP. Okay? So in this step number 7 and step number 10, there is formation of the 4 ATP. 2 ATP are formed into step number 7 and 2 ATP are formed into step number 10. But during phosphorylation in this step number 1 and step number 3, there is utilization of 2 ATP molecules. So we have to minus that 2 ATP. So यहाँ पर ATP used, कितने ATP यूज हुए? वहां पर 2 ATP यूज होंगे. ओके, सो हमें इसको माइनस करना है. सो हमें कितने ATP मिलेंगे? 2 ATP. दिस इज द नेट गेन ऑफ ATP at the substrate level. There is formation of 2 ATP. Net gain of the ATP is 2 ATP at the substrate level phosphorylation or at the substrate level during the glycolysis. But we know that there is formation of 2NADH2 during the glycolysis. Glycolysis में NADH2 के 2 molecules form होते हैं. और हमने ETS में स्टडी किया था कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देयर इज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ दिस NADH2. सो यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होगा NADH2 का, और हमें पता है कि अगर 1 NADH2 ब्रेक होता है तो कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? 3 ATP का. सो यहाँ पर देखिए 2 NADH2 into 3 ATP, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 6 ATP. कितने ATP का फॉर्मेशन हुआ? 6 ATP का. सो ये जो 6 ATP का फॉर्मेशन हुआ है, दिस 6 ATP आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. कहां से फॉर्मेशन हुआ इसका? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो बाय ब्रेकडाउन ऑफ दिस 2 NADH2, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द 6 ATP. So this 6 ATP plus this 2 ATP during glycolysis there is formation of 8 ATP. Glycolysis में कितने ATP का फॉर्मेशन होगा? 8 ATP का. लेकिन अगर क्वेश्चन आता है how many ATP are formed during glycolysis at the substrate level, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सबस्ट्रेट लेवल में कितने ATP का फॉर्मेशन होता है तो इसका आंसर क्या होगा? 2 ATP. ओके, ये सबस्ट्रेट लेवल है. अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा तो इसमें कितने ATP आएंगे? 6 ATP. और ओवरऑल अगर ATP देखा जाए सबस्ट्रेट लेवल प्लस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 8 ATP फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ द ग्लूकोज. ओके, सेकंड हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, बट दैट पायरुविक एसिड फर्स्ट गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A एंड देन इट एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल. सो यहां पर जो सेकंड स्टेप है हम इसे क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन. दैट इज कॉल्ड एज द लिंक रिएक्शन, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द एसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट. सो एसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट में 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है NADH2. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2. And we know that 1 NADH2 is equal to 3 ATP. Hence, here is formation of 6 ATP
during the link reaction or the acetylation of the pyruvate. So here total ATP formed during the link reaction is the 6 ATP. Okay. अभी नेक्स्ट जो स्टेप आएगी दैट वन इज द क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? क्रेब्स साइकिल और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द cyclic acid cycle, okay, or it is also called as the TCA cycle. अभी देखिए क्रेब्स साइकिल में एट द सबस्ट्रेट लेवल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP. जब सबस्ट्रेट लेवल में देखेंगे सक्सेन कोएंजाइम A2 सक्सेनेट, जब ये प्रोसेस होती है ड्यूरिंग दिस स्टेप there is addition of water molecule and in the presence of enzyme thiokinase, GTP guanosine triphosphate get broken down so as to release the inorganic phosphate. That inorganic phosphate combines with the ADP molecule so as to form the ATP, and that phosphorylation is the substrate level phosphorylation. And we know that Krebs cycle occurs twice, so there is formation of the 2 ATP molecule at the substrate level. और क्रेब्स साइकिल में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, ये भी लिंक रिएक्शन का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है. जब क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, we know that during Krebs cycle there is formation of 6 molecules of NADH2 and there is formation of 2 molecules of FADH2. So 6 into 3 ATP is equal to 18 ATP. कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा? 18 एटीपी का. and 2 FADH2 into 2 ATP there is formation of the 4 ATP. Okay, so here formation of ATP at the substrate level during the Krebs cycle is only 2 ATP. Okay, only 2 ATP, and at the oxidative phosphorylation or by the ETS there is formation of 22 ATP. So overall gain of the ATP during the Krebs cycle, including the substrate level and the oxidative phosphorylation. This is the oxidative phosphorylation. There is formation of 24 ATPs. Okay. So here 8 ATP molecule total formed by the glycolysis, including substrate level phosphorylation as well as the oxidative phosphorylation. 6 ATP molecules are formed during the link reaction. This is the oxidative phosphorylation, and 24 ATP molecules are formed during the Krebs cycle, including the substrate level phosphorylation and the oxidative phosphorylation. So 8 ATP from the glycolysis, 6 ATP from the link reaction, and 24 ATP from the Krebs cycle. So their total formation of 38 ATP molecules from the oxidation of 1 glucose molecule. Okay, so जब 1 glucose molecule का breakdown होगा, oxidation होगा during the aerobic respiration by glycolysis, link reaction, Krebs cycle and the ETS. Actually this comes into the oxidative phosphorylation. Okay, हम इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं कि Krebs cycle में क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ETS. हम ETS को सेपरेट कर सकते हैं. ETS में 18 और ये 4, ओके, बाय NADH2, और यहाँ पर क्या होगा 2 FADH2, there is formation of 2 ATP. So 2 FADH2 into 2 ATP, there is formation of the 4 ATP. So हम इसको सेपरेटली ETS में भी लिख सकते हैं, but during all overall aerobic respiration by oxidation of 1 glucose molecule there is formation of 38 ATP molecules. Actually there is formation of 40 ATPs, but these 2 ATPs we have to minus, which are utilized during the glycolysis. Okay, so this is all about the balance sheet of the ATP. Okay, now we have to study the amphibolic pathway.
we studied that respiration is a catabolic pathway, or during respiration there is the breakdown of the organic substances. But we observe that there is synthesis of some biomolecules or some compounds. So when carbohydrates are the respiratory substrate, they first get broken down into simple organic substances like the glucose molecule. Glucose consists of 6 carbon. Now this glucose undergoes the glycolysis so as to produce the 2 molecules of pyruvic acid. So here glucose molecule first get converted into glucose 6-phosphate by the addition of the phosphate. यहाँ पर एक ATP का utilization भी होता है, that is phosphorylation. Then glucose 6-phosphate by the isomerization get converted into fructose 6-phosphate. Now this fructose 6-phosphate is get converted into fructose 1,6-diphosphate, which consists of 6 carbon. Now this fructose 1,6-diphosphate get broken down into 2 molecules of 3 carbons, that is dihydroxyacetone phosphate DHAP, और जो दूसरा होता है that is the glyceraldehyde 3-phosphate. It is get converted into glyceraldehyde 3-phosphate. Now this glyceraldehyde 3-phosphate get converted into pyruvic acid. We are not writing the intermediate step. Directly glyceraldehyde get converted into 2 molecules of pyruvic acid, which consists of 3 carbon. Now this pyruvic acid first get converted into the acetyl coenzyme A by the link reaction or the acetylation of the pyruvic. We know that pyruvic acid does not directly enter into the Krebs cycle. First it is get converted into the acetyl coenzyme A, which consists of 2 carbon. And then this acetyl coenzyme A enters into the Krebs cycle. And then that acetyl coenzyme A get oxidized into the Krebs cycle. So जब कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा सबसे पहले, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6-phosphate में बाय द फॉस्फोराइलेशन. By isomerization, glucose get 6-phosphate get converted into fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate get converted into fructose 1,6-diphosphate. और यहाँ पर क्या होगा? By the cleavage, the fructose 1,6-diphosphate get converted into 2 molecules, dihydroxyacetone phosphate and the glyceraldehyde. Now this glyceraldehyde and DHAP are isomer of each other. Then glyceraldehyde get converted into 2 molecules of pyruvic acid. Then pyruvic acid converted into acetyl coenzyme A, and then it enters into the Krebs cycle. And then there is a complete oxidation of the acetyl coenzyme A so as to release the energy in the form of ATP. Now, when fats are the respiratory substrates, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होंगे, उसके बाद ब्रेक होंगे फैट्स. So when that fats are the respiratory substrate, the fats are first get broken down into 2 molecules. First one is the fatty acids and second one is the glycerol. सबसे पहले क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद क्या ब्रेकडाउन होगा? फैट्स. So when fats are the respiratory substrate, that fats are get broken down into 2 molecules, fatty acids and the glycerol. Then glycerol first converted into the DHAP. Glycerol का कन्वर्जन किसमें होगा? DHAP में होगा. DHAP is the dihydroxyacetone phosphate. So this glycerol get converted into DHAP, dihydroxyacetone phosphate. Then this dihydroxyacetone phosphate by the isomerization get converted into the glyceraldehyde 3-phosphate.
Now this glyceraldehyde 3-phosphate get converted into pyruvic acid, and then that pyruvic acid get converted into acetyl coenzyme A, and then it enters into the Krebs cycle. मतलब देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किसमें हुआ, एसिटिल कोएंजाइम ए में, फिर वो कहाँ पे एंट्री हुआ, क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर भी देखिए फैट्स का ब्रेकडाउन हुआ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल का कन्वर्जन किसमें हुआ, डीएचएपी में, डीएचएपी डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, डीएचएपी बाय द आइसोमराइजेशन किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का कन्वर्जन किसमें हुआ, पायरुविक एसिड में, और ये पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए पायरुविक एसिड क्या करेगा, लिंक रिएक्शन या फिर एसिटिलेशन करेगा, एंड देन बाय एसिटिलेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, एंड देन इट एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल. ओके, नाउ द फैटी एसिड्स आर directly converted into the acetyl coenzyme A by the process of beta oxidation. By the process of beta oxidation, the fatty acids are get converted into acetyl coenzyme A, and then they enters into the Krebs cycle in the form of acetyl coenzyme A. So यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट acetyl coenzyme A में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर ग्लिसरॉल एसिटिक कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर फैटी एसिड का भी कन्वर्जन किसमें हुआ, एसिटिक कोएंजाइम ए में, फिर उसके बाद हम कहां पर एंटर हुए, क्रेब्स साइकिल. ओके, अभी जो थर्ड कंपाउंड होगा रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट होगा, दैट इज द प्रोटीन्स. कौन सा होगा, प्रोटीन. सबसे लास्ट में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा. वी नो दैट प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द अमीनो एसिड. प्रोटीन किससे बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स. They are made up of amino acids. 20 amino acids came together so as to form the one protein. 20 amino acids एक साथ आते हैं, उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और उसके बाद फॉर्मेशन होता है वन प्रोटीन का. And that amino acid consists of one amino group and one carboxyl group. So when that amino acid undergoes the deamination, deamination मतलब क्या, इसमें से जो अमाइनो ग्रुप होता है वो अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डीअमाइनेशन. सो बाय डीअमाइनेशन ये अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप होगा वो रिमूव किया जाएगा, मतलब अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा बाय रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप, एंड देन दैट अमाइनो एसिड्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू द एसिटिल कोएंजाइम ए, एंड देन दैट एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल. मीन्स यहाँ पर देखिए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कोई भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फिर फैट्स हो या फिर प्रोटीन्स हो, वो क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होंगे, और उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे. सो यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स लाइक द आइसोसाइट्रेट या फिर सक्सिनेट, फ्यूमारेट, ऑक्सैलिक एसिड. These intermediates are used for the biosynthesis of other complex compounds. So that's why respiration, during respiration there is breakdown, no doubt, there is the breakdown of the organic substance, but the intermediate compounds formed during the Krebs cycle are also used for the biosynthesis of some complex substances or the compounds, means they are showing the anabolism. So this respiration showing anabolic reaction as well as the catabolic reaction. So it is showing both anabolism as well as the catabolism. Ana means biosynthesis, cata means breakdown. So ये respiration की प्रोसेस में breakdown भी होता है और कुछ बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस भी होता है, and that's why this pathway is called as the anabolic pathway. Anti का मतलब होता है both, और both मतलब क्या, ये दोनों, anabolic plus catabolic, and that's why this pathway is called as the anabolic pathway, and respiration nowadays considered as the anabolic pathway. Okay, remaining part we will be discussing next lecture.